do this when I'll feel motivated. Biggest bullshit. Biggest bullshit to ever exist. Just imagine 1 month from now, you look at yourself in the mirror and for the first time in a long time, you smile. You smile by seeing yourself in the mirror. You see the new version of you. You see the version of you that you always wanted to be, that you have always dreamt of to be. And finally, the you is standing in front of you and you are witnessing it. The happiness, oh my god. Insane. Yes, you kept the promise you made to yourself. The confidence, the satisfaction, the glow that you will see on your face will be worth every difficult days, every craving, every workout that you wanted to skip, every day that when you compared yourself to others, every day when you felt like you can never be perfect or you can never be the way you want it to be, will be worth it. Imagine looking at your Pinterest board and the person you have been admiring so long is becoming you and not somebody else. And trust me, thoda sa mehnat is worth so much more than the temporary comfort of giving up today. So just stay with me till the end of this video, because 1 month from now, you'll either be grateful that you have started or wishing that you had. Also, the people who are watching this video, if you are currently in your weight loss journey or if you're trying to lose weight, then I am very, very, very proud of you. And I know it's very strange coming from a stranger on the internet, but I know how the process feels like. I know how hard it is, and this, I have been there in your position as well. Find a damn reason. Find a damn reason. The first thing that helped me losing my weight is finding my reason. And when I say find a reason, it does not mean that, oh, I need to lose weight. No, I mean a reason so strong that every time you want to quit, that reason pulls you back. My reason was very simple. And my reason was I wanted to see my new version. I wanted to see the new version of myself. I wanted to see how I look. I wanted to see the happy me. The version of me that will feel happy, that will not feel insecure while taking pictures or while hanging out with friends or talking to other people. I wanted to see the confident me. The me who smiles while looking in the mirror. The me who does not overthink any picture. The me who does not spend hours comparing herself with others, comparing her body with others. The me who always wanted to wear clothes of a dream. The me who is genuinely happy with herself, with her body. I just wanted to be happy. I just wanted to feel confident in my own body. And honestly, these reasons were very stronger than any craving, any excuse and any distraction. Every time you feel like quitting, think about that reason continuously. Tell yourself that damn, you have a reason to do this. You need to prove yourself. Just tell the reason. You need to, you always need to tell yourself this reason every time you feel like giving up. Because you know what? When motivation leaves, your reason stays. Dar paida karo. Ask yourself, do I have any fear? If not, then create one. Fear can change your life. Yes, because for me, it did. Fear of remaining the same. Fear of not changing. Fear of bearing with the same lifestyle. Fear of never discovering the new version of myself. Fear of keeping up with the same life. Fear of those insecurities. And every time I thought about quitting, all this fear worked in me. What if I fail? What if I spend another year promising myself that I'll change and then do absolutely nothing about it? You know what? I was so scared of failing, and that fear became so strong that giving up wasn't even an option anymore. Whenever I felt lazy, whenever I felt distracted, whenever I wanted to postpone things tomorrow, that fear always reminded me why I started. And you know what? मुझे weight loss से ज़्यादा इस बात का डर लगता था कि अगर मैं छोड़ दूं मिडवे, तो जो वर्जन ऑफ मी फ्यूचर में मेरे लिए वेट कर रहा है उससे मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगी. खुद के अंदर ना एक डर पैदा करो, क्योंकि वो डर तब काम आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट, आई एम फीलिंग सो डिस्ट्रैक्टेड, आई नीड मोटिवेशन, मुझसे नहीं हो रहा है. जब भी ये सब थॉट्स तुम्हारे आजू बाजू आएंगे ना, तो वो डर तुम्हें हेल्प करेगा इस चीज से मुकाबला करने की. that fear will remind you that why you need to do this. That fear, and this is not limited to weight loss. Everything you do, everything you always wanted to do, जब तुम्हारा ये फेज आएगा ना कि I just want to quit, मुझसे नहीं हो रहा है, तब that fear will help you and it will push you forward to achieve the thing that you want to do. That fear will always remind you कि यार अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम पछताओगे. क्योंकि यू नो व्हाट, एवर सिंस आई वाज अ किड, मुझे ना
जब मैं मूवीज वगैरह देखती थी एंड वहाँ पे जब कॉलेज सीन्स होता था कि हीरोइंस की एंट्री होती है एंड हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट गर्ल इट गर्ल काइंड ऑफ अ वाइब, आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट थिंग. आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू सी मी इन दैट वे. सो अगर हमेशा अपने वेट लॉस के टाइम पे जब भी ये थॉट मेरे में आता था कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, आई कैन नॉट डू दिस, तभी वो जो डर था ना कि अगर मैं अभी नहीं करूंगी तो वटेवर मैंने सोचा था कि अपने वेट लॉस के बाद करूंगी, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी. तो जब भी मेरे दिमाग में क्विट करने का थॉट आता था ना, वो डर ऐसे उसको भगा देता था कि क्विट करने का चांस ही नहीं था. क्विट करने का कोई चांस ही मेरा नहीं होता था. आई ऑलवेज फेल्ट लाइक मुझे करना है, आई हैव टू डू इट. कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट हैव टू डू इट. क्योंकि जब भी कोई भी रीजन आता था क्विट करने का, तभी वो नेगेटिव थॉट्स, वो डर, वो फियर ऐसे मेरे आजू बाजू घूमता था कि कोई चांस नहीं था मेरा क्विट करने का. और अगर एक बार तुम्हारा ये फियर, किसी भी चीज का फियर तुम्हारे अंदर घुस गया ना, अब वो तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो इतना छोटा लगने लगेगा कि तुम बोलोगे यार डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं रोक सकता. तब वो लेजीनेस, फिर वो तुम्हारा क्विट कर देने का थॉट, वो तुम्हारा एक्सक्यूजेस, सब कुछ छोटा लगने लगेगा. गिव अप करने का मतलब सिर्फ वेट लॉस छोड़ना नहीं होता. गिव अप करने का मतलब ये होता है वही फिर से सेम लाइफ जीना जिससे तुम ऑलरेडी तंग आ चुके हो, एंड जस्ट टू इम्प्रूव दैट लाइफस्टाइल ऑफ योर्स. तुमने सोचा था खुद को चेंज करने का, वो भी नहीं हो पाएगा. So in short, you need to get back to the old fucking life that you were already living. Use the fear not to hurt yourself, but to remind yourself that you deserve better than repeating the cycle again and again. यार एक बार करके देखो. When I was in my weight loss journey ना, I never imagined about the last step. I mean, I never imagined the result that I will see after 1 month. Whenever I wanted to quit, I never thought about losing 15 kg. I never thought about 6 months or 1 month. I just told myself, यार एक बार करके देखते हैं. Just एक बार, मतलब एक और एक्सरसाइज करके देखते हैं, एक और बार अच्छा हेल्दी खा के देखते हैं. बिकॉज व्हाट, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे कैन नॉट डू इट. दे फेल बिकॉज दे स्टॉप टू सून. दे ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेस. वो करने से ज्यादा ना वो प्रोसेस को फील करने लगते हैं. एक बार अगर उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया तो वो वही दिन रात ये सोचेगा कि यार वेट लॉस करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, इतना हेल्दी खाना पड़ता है, ये सब खाना छोड़ना पड़ता है, इतना वर्कआउट करना पड़ता है. ओ माय गॉड, बस यही पे वो छोड़ देंगे, यही सोचेंगे एंड यही वो छोड़ देंगे. सो नेवर, डोंट थिंक अबाउट द प्रोसेस. तुम सिर्फ खुद को बोलो यार एक बार करके देखते हैं, चलो देख ही लेते हैं क्या होता है. आज अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम कल के बारे में मत सोचो. तुम लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बारे में सोच लेते हो, यहाँ पर ही तो तुम खुद का बर्बादी कर देते हो. टेल योरसेल्फ यार एक बार करके देखते हैं. दैट्स इट. समटाइम्स व्हाट, वन मोर डे चेंजेस एवरीथिंग. एंड please get this out of your head that just because you messed up one day doesn't mean you have messed up your entire journey. Please get this shit out of your head. I see so many people doing this. They'll eat healthy for like a week and then one day they'll eat something heavy or unhealthy, or maybe they'll miss a workout and then they'll feel like बस हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सारा मोटिवेशन चला गया. ऐसे कैसे होगा वेट लॉस? अब तो सारा वीक वेस्ट हो गया, कैसे करूंगी मैं वेट लॉस? मैंने तो जंक फूड खा लिया यार, मेरा ट्रैक ही खराब हो गया. नहीं, डोंट थिंक लाइक दिस. वन बैड मील डजंट मेक यू गेन ऑल योर वेट बैक, जस्ट लाइक वन गुड मील डजंट मेक यू लूज वेट. Yeah, it works like that. The problem is not the mistake you made. The problem is what you do after making the mistake. Most people don't quit because they had one bad day. They allow that one bad day to turn it into a bad week and then a bad month. And then they end up exactly where they started. So the next time you mess up, please don't sit there feeling guilty. Don't punish yourself. Don't tell yourself that okay, you're gonna start next Monday just because you have ate unhealthy previous week, like on Friday or Thursday. Please don't tell yourself okay, everything messed up and I'm gonna start from the next Monday. Please do not do this. अगले मील से वापस ट्रैक पर आ जाओ, अगले दिन से फिर से शुरू करो अच्छा खाना. Because consistency isn't about being perfect every day. It's about coming back every time you fall off. I'll do this when I'll feel motivated. Biggest bullshit to ever exist. Biggest bullshit. Motivation is not where the journey starts. The journey starts when your fear becomes strong enough, when your reason becomes strong enough. Once you have a reason that pulls you forward and a fear that pushes you from behind, motivation starts showing on its own. Eventually consistency follows, because trust me, there were so many times when I didn't feel motivated. I didn't feel like waking up. I didn't feel like doing my workout. I didn't feel like eating healthy. But I had a reason, I had a fear to do it anyway. And those two things, fear and reason, were
stronger than how I felt in that moment. So if you're like constantly saying that I don't have a motivation to do this, or I don't have a motivation to wake up in morning, I don't want to do it because I don't feel motivated, I don't want to eat healthy because I don't feel motivated, then maybe the problem isn't motivation. Maybe the problem is your reason is not strong enough, or maybe you have no fear, or your fear is not even working. Because when your reason becomes strong enough and your fear becomes real enough, you'll stop asking for motivation. You'll just do it, and that's where everything starts changing. और एक बात हमेशा याद रखना, अगर end result चाहिए ना तो उसके लिए phases से गुजरना पड़ेगा, and that phases are not same. It varies. It constantly changes. प्रोसेस को स्किप करके कभी रिजल्ट नहीं मिलता. ट्रस्ट मी, अगर एक बार आप लोग सोचोगे ना कि एंड रिजल्ट कितना सेटिस्फाइंग होने वाला है, कितना खुशी देने वाला है आपको, लाइक आप हमेशा वो एंड रिजल्ट पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी और कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, अगर ये सोच लिया ना अपने, तो धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस भी अच्छा लगने लगेगा. फिर क्विट करने का ख्याल आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा. फिर ये प्रोसेस से आपको प्यार हो जाएगा, ये प्रोसेस आपको अच्छा लगने लगेगा, एंड क्विट करने का ख्याल भी आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा. क्योंकि आपको पता होगा कि आपका हर एक छोटा स्टेप आपको अपने उस वर्जन के और ले जा रहा है जिससे मिलने का आपने इतने टाइम से सपना देखा है. आई होप यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ. एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड द लाइक बटन, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.